सर जब तारे ज़मीं पर आई थी तो इट वाज यूनानिमसली प्रेज्ड, क्रिटिक्स ने भी बहुत प्रेज किया था उसको, तो आपको उस चीज़ का प्रेशर नहीं लगता ये फिल्म उसकी लेगेसी को अचीव कर पाएगी? क्योंकि वो लेगेसी का जो बाप है वो मेरे साथ था। सर अगर आप सितारे ज़मीं पर को तमिल में बनाते तो किस एक्टर के साथ बनाना चाहते हैं? मैं आमिर खान सर को तमिल सिखाता। सर क्या आपको लगता है कि सिनेमा सोसाइटी को चेंज करता है? आई डोंट नो इफ सिनेमा चेंजेस सोसाइटी, बट आई थिंक जो लोग सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं वो लोग सिनेमा को पॉजिटिवली यूज़ करें। सर वाइल मेकिंग द फिल्म कोई ऐसी रिस्क ली आपने जो बाद में पे ऑफ की हो अच्छे से? मैं वेट किया आमिर सर के लिए। सर आज के टाइम पे मैक्सिमम एक्टर्स हैं वो एक्शन फिल्में कर रहे हैं, यू नो मास कमर्शियल फिल्में, बीट यू नो रजनी सर, कमल सर, एवरीवन इज डूइंग दैट। नॉर्थ में भी, बॉलीवुड में भी वॉर 2 आने वाली है। यहाँ पर आप एक स्लाइस ऑफ लाइफ, यू नो एक कॉमेडी फिल्म कर रहे हैं जिसमें एक सोशल कमेंट्री भी है, तो क्या थॉट है इसके पीछे सर? जो भी फिल्म हम करें ऑडियंस के दिल को छुए, इट शुड टच द ऑडियंस। वी हैव टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड हिम दैट सर इतना भी हम्बल, डोंट बी सो हम्बल। या वेलकम टू मेरे पास सिनेमा है। मेरा नाम है मृदुल शर्मा और आज मेरे शो पर एक ऐसे डायरेक्टर हैं, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स ऑफ द ईयर, सितारे ज़मीन पर है कि डायरेक्टर मिस्टर RS प्रसन्ना। कैसे हैं सर आप? थैंक यू मृदुल, थैंक यू सो मच सर। आई एम डूइंग गुड, थैंक यू। सर मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा, ट्रेलर लुक्स अमेजिंग एंड काफ़ी रिफ्रेशिंग ट्रेलर लगा है। तो हाउ वाज इट वर्किंग विद आमिर सर? सर एब्सोल्यूट डिलाइट वर्किंग विद आमिर सर। ऐसा ड्रीम है जो हम ड्रीम भी करने का शायद मेरे अंदर हिम्मत नहीं था। ओके, मेरा हिंदी अच्छा है ना? हाँ सर सही है, अच्छा है। सो आई एम अ चेन्नई बॉय एंड huge fan of Kamal sir. Grown up watching Kamal Haasan's films, and then I saw Everyone Lagan. I saw Lagan, and I felt यार ये कमल हासन सर का बॉम्बे वर्जन है, हिंदी वर्जन है, कि it's like younger brother of my idol. काफी appropriate comparison. Correct ना? Yeah, Yeah, you agree? Totally, yeah, totally. Superb. Sir. Yep. So We have become pan India now. totally sir. So it's absolute delight working with Amir sir. But you know आमिर सर जब प्रोजेक्ट में आते हैं तो does he come with a baggage of being a superstar? None at all. He comes with all the humility of a newcomer. Okay. And he carries with him, I think, a lot of one of the main aspects of working with sir is that, you know, they say he's a perfectionist. This is a word Yep. which I have heard about him. Yeah. But I think I would like to give a new contribution to this title, that he is a perfectionist in how to behave with people. Okay. एक बिहेवियर का परफेक्शन होता है ना, वो सर है। द वे ही बिहेव्स विद हिज स्टाफ, विद हिज टीम, विद द डायरेक्टर, विद द एडी, द वे ही रेस्पेक्ट्स every single person on set, whoever it is. I think that comes from Aamir sir himself has been an AD. Aamir sir has been part of the film crew. Yep. So he comes with a lot of respect for every single department. And the way he respects, you know, is something you have to be on set to see. Okay, sir. So none of the baggage of a superstar. If anything, we have to remind him he's a superstar many times. कि सर आप ऐसा भी मत, क्या सर आप बोल रहे हो, आप इतने बड़े स्टार हो. We have to constantly remind him that सर इतना भी humble, don't be so humble. Yeah. सर जैसे कि आपने बोला कि आमिर सर परफेक्शनिस्ट हैं, पर परफेक्शनिस्ट के साथ साथ सर कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस भी आए होंगे आमिर सर के साथ इनिशियली, ऐसा कुछ हुआ? नहीं. So I have a feeling that ये क्वेश्चन आमिर सर को ही मैं पूछा था कि सर हाउ डिड यू गेट दिस लेबल दैट यू नो दे टेल अबाउट यू, बिकॉज एवरी एक्टर हैज़ एन ओपिनियन, एवरी सिंगल प्रोड्यूसर sits on the script, approves the edit, but why Aamir sir alone is being asked this question? So he said no, in my initial years I used to ask so many questions कि उनको लगा कि यार मैं बहुत क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं है. So आमिर सर के साथ इनफैक्ट आई वुड से दैट sir's sensibility and my sensibility, you know, I love you know his films, and you know the kind of cinema that he wants to do, which is mainstream entertainment भी हो, sensitivity भी हो, emotions भी हो, quality भी हो, that's exactly जो सर प्रिंसिपल है वो स्कूल का मैं स्टूडेंट हूँ. So how can there be a creative difference? It cannot be there. There can only be what do I say, guidance from his side or learning from my side. And if anything, he's very empowering of his director. Like, okay,
if you believe that that is the correct thing to do, then go ahead and do it. He is that kind of person who empowers his directors. He trusts his directors a lot. That's what I've seen. सर इस फिल्म में आपने रियल इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों के साथ काम किया है, तो हाउ चैलेंजिंग वाज इट? It was actually a very pleasurable process, Mridul. You'll be surprised perhaps, but I think they accepted us with so much of love, and they took up the challenge of teaching us how to deal with this process. Really, कि इतना प्यार मिला हमको, इतना आप शायद देख चुके होंगे वो behind the scenes moment. It was like that every day. Now yes, before that casting process and getting them, getting the 10 actors was a long process. So time लगता है, patience होना चाहिए उसमें, वो है. पर difficulty as such, it was a pleasure working with all of them. सर बार बार जब आप टेक्स लेते थे तो ऐसा नहीं होता था रीटेक्स बार बार जाएं, क्योंकि प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं है कई सारे? नहीं, पर प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ भी रीटेक्स जाता है. जी, तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं है उस तरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. इनफैक्ट हमारा रिहर्सल प्रोसेस इतना कड़क था. अगेन विद आमिर सर एज अ प्रोड्यूसर, he is a person who understands the power of rehearsal. So we got, like my team, Pawan was there, my AD. Then I had a acting coach called Manoj. He's an actor himself. He used to do workshops with them. I used to sit with them. So we used to have joint reading sessions with Aamir sir also towards just before the beginning of the film. So all of this, we made sure that they learned the lines. They got all the rehearsals much before they went on the shoot, which we would do with any actor anyway. Only thing is, they may take little more time than others, but some of them would take very less time. So ऐसा भी नहीं बोल सकते. In fact, I would say that having them on set was an absolute pleasure because they are such fine actors, and वो कभी भी give up नहीं करते. And trailer is really full of life. वो दिखता है ट्रेलर में जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं सर. हाँ. जी, काफ़ी मज़ेदार ट्रेलर लगा. एंड सर आज के टाइम पे मैक्सिमम एक्टर्स हैं वो एक्शन फिल्में कर रहे हैं, मास कमर्शियल फिल्में, बीट रजनी सर, कमल सर, एवरीवन इज डूइंग दैट. नॉर्थ में भी, बॉलीवुड में भी वॉर 2 आने वाली है. यहाँ पर आप एक स्लाइस ऑफ लाइफ एक कॉमेडी फिल्म कर रहे हैं जिसमें एक सोशल कॉमेंट्री भी है, तो क्या थॉट है इसके पीछे सर? कुछ थॉट नहीं है. आई मीन वी वांट टू टेल अ स्टोरी, एंड आई थिंक एनी फिल्म विच इज अ गुड, which connects well with the audience. That is what every director will want to do. It's not about the genre. कि जो भी फिल्म हम करें, हमको ऐसा फिल्म करना चाहिए जहाँ पे ऑडियंस को, जो ऑडियंस के दिल को छुए. It should touch the audience. Totally. Either it is a thrill, or it is romance, or it's a navarasa. The navarasa is the same for every film, right? Totally. So if you do an action film, do it with full heart. If you're doing a romance film, do it with full heart. I think that is what is important. सबका अपना अपना नॉर्मल होता है. सर जब तारे ज़मीं पर आई थी तो इट वाज यूनानिमसली प्रेज्ड, क्रिटिक्स ने भी बहुत प्रेज किया था उसको, तो आपको उस चीज़ का प्रेशर नहीं लगता ये फिल्म उसकी लेगेसी को अचीव कर पाएगी? क्योंकि वो लेगेसी का जो बाप है वो मेरे साथ था. सो आई थिंक वो बहुत ऑर्गेनिकली हुआ. सो एक्चुअली दैट सजेशन इटसेल्फ केम फ्रॉम आमिर सर ओनली. सो बिकॉज ऑफन आई वुड कॉन्स्टेंटली कीप कोटिंग तारे ज़मीन पर, हाउ मच आई लव इट एंड हाउ मच हाउ द सीन्स एंड एवरीथिंग. सो वी यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली द ब्रेक टाइम, नॉट ड्यूरिंग द शूट, बिफोर दैट. सो दैट टाइम वी यूज्ड टू कीप कॉन्स्टेंटली टॉकिंग. देन वन डे ऑर्गेनिकली इट केम कि यार ये थॉट, इट्स लाइक इट्स इन द सेम वर्ल्ड ऑफ तारे ज़मीन पर. जो हमारा इंटेंट है, जो एक दिल है ये पिक्चर के अंदर, जो एक सोच है, उसका ही फैमिली में ये बिलोंग करता है ना. सो शुड वी काइंड ऑफ लाइक मेक इट लाइक थिंग. आई सेड सर, आई मीन आप मुझे पूछो, आई मीन इट्स योर बेबी एंड यू शुड डिसाइड सर, बिकॉज मेरा तो औकात नहीं है वो बोलने का, बिकॉज आई एम द फैन हु सॉ द फिल्म. सो इट्स योर डिसीजन. देन वी ऑर्गेनिकली द डिस्कशन में ये टाइटल भी आया सितारे ज़मीन पर का. एंड बिकॉज सर वॉज विथ मी थ्रू आउट, आई थिंक I was very lucky because he was there. So if he was not there, I would have definitely felt कि सर क्या सोचेंगे. तो सर तो है ही यहाँ पे. So it was very enjoyable journey. सर आपकी सारी फिल्मों में फील गुड कॉमेडी होती है और सोशल कॉमेंट्री भी होती है विदाउट बीइंग प्रीची. तो सर ये कैसे करते हैं आप, इसके बारे में बताइए. तो पहले मैं सारी फिल्म बोलने का वो नंबर नहीं है क्योंकि इसमें बना है एक फिल्म हिंदी में, बट थैंक यू फॉर योर लव. इवन द तमिल वन. इवन द तमिल वन, थैंक यू फॉर दैट.
वो आई लाइक ह्यूमर यार, मुझे लग रहा है कि ह्यूमर एंड फील गुड एंड ह्यूमर के लिए हम सब लोग तड़प रहे हैं लाइफ में. इतना सारा स्ट्रेस है लाइफ में, इतना सारा नेगेटिविटी है लाइफ में, पर हम सब लोग when we go out for a trip, when we hang out with our friends, are we sad with our friends? No, we are happy. We share love. We celebrate life with our friends and family. You know, so I feel that if that is there in a movie, you know, it will also connect with a lot of people, because I feel that more and more we need such movies which speak about the feel good nature of life. Because बहुत ये cynical world में हम जी रहे हैं. Social media में देखो, इसमें देखो, हर एक जगह लोग यू नो दे आर गुड इज ऑल्सो देयर, बैड इज ऑल्सो देयर. टोटली. तो समटाइम्स मुझे लग रहा है भाई मुझे अभी हंसना है, मुझे अभी प्यार के साथ मुझे बात करना है. तो आई फील दैट फील गुड मूवीज गिव यू दैट जॉय ऑफ, like I watched recently a movie called Mai Aragan in Tamil. Okay. I saw that movie and I felt so happy. It's Arvind Swamy Karthi movie. Yeah. Prem Kumar, very good director. director. Yes. I was so happy. I saw the film. I wanted AK sir to see it also. Okay. I called the director, called him home. He was kind enough to come home when he was in Bombay. Okay. इतना मैं I was saying thank you. It was like therapy for me. So I think हमको therapy films चाहिए. Totally. To kind of like make us positive. Sir, what other genres would you like to explore in Bollywood? I feel that more than genre, like any genre, I would love to explore, as long as the story is very good. And I feel any genre anything which gives you hope, I would love to do. Be it a horror movie which gives you hope, be it an action film. Okay. I would like to do a positive film. I mean, even if the ending is positive and till then I scare you, I would love to do that. But for example, I'm a big fan of Jackie Chan. So when I used to watch Jackie Chan movies, I used to be so happy because वो humor के साथ वो stunts करता था. But having said this, when I see a movie like Life of Pi, when I see a movie like Cinema Paradiso, then one feels, yaar, when do I make a movie like that? You know, so that one desires. Then when I saw a movie like Lagan, I felt, when do I ever, you know, forget making a movie. ये टीम के साथ मैं कैसा बात करूँ यार? Will I ever reach? You know, which happened. The working with Aamir sir gave me that opportunity. सर, अगर आप सितारे ज़मीन पर को तमिल में बनाते तो किस एक्टर के साथ बनाना चाहते हैं? मैं आमिर खान सर को तमिल सिखाता. बहुत And he will learn it with love. Yeah, totally. और इतना इंटरेस्टिंग आपने मतलब ये चॉइस दिया. सर, क्या आपको लगता है कि सिनेमा सोसाइटी को चेंज करता है? I don't know if cinema changes society, but I think जो लोग सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं वो लोग सिनेमा को पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं. सो आई डोंट नो इफ इट कैन चेंज सोसाइटी, बट अ मूवी लाइक तारे ज़मीन पर हैज़ चेंज द सोसाइटी. इट हैज़ मेड इट पॉजिटिव. लॉट ऑफ पीपल आई मीट have come out. Satyameva Jayate impacted society. So yes, it does change society. But more than whether it can change, I think it does change. And उसका वो quantum मुझे पता नहीं है. But if anything you do can positively impact society, apart from it being a business and all that, then one should do that. Sir, while making the film, कोई ऐसी risk ली आपने जो बाद में pay off की हो अच्छे से? मैं वेट किया आमिर सर के लिए बिकॉज एवरीबडी वॉज टेलिंग दैट्स वेरी रिस्की, व्हाई आर यू वेटिंग सो लॉन्ग, एंड आई ओनली केप्ट टेलिंग दैट माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है. वो एक्लेमेटाइजेशन होता है ना, वो एक प्रोसेस जो होता है जहाँ पे बोलता है ऐसा ना, यू कैन नॉट जस्ट क्लाइंब अप, यू विल गेट ब्रेथलेस. तो आई थिंक लाइफ गेव मी टाइम so that I could slowly get used to the Mount Everest, and so that I did not feel suffocated, you know, when the movie started. I got a lot of time to spend with Aamir sir. Okay. Like almost good 2 years. Just hanging out, talking and being part of his family. He gave me a lot of love. So that time, you know, I feel it is only in that sense the risk I took, which paid off because I got a film with Mr. Aamir Khan. And a lot of people tell me that, wow, इतना सालों से तू शुभ मंगल के बाद यही प्लान कर रहा था क्या, that you will do with Aamir Khan? And it is not planned, it happened. So it gave a meaning to that waiting period where I was searching for something better, something meaningful, something from my heart. And then through Sitaare, I could meet Aamir sir. So I think that waiting for Aamir sir, waiting for Sitaare is something I'm very blessed.
मेरा सर सवाल यही था कि शुभ मंगल सावधान के बाद इतना टाइम क्यों लगाया क्यों लगाया, करेक्ट जी पता नहीं आई डोंट नो। अभी आप जब आप रिसेंटली समबडी टेल मी 8 years हो गया, या अरे बाप रे 8 साल हो गया। तो इट वाज आई डोंट नो यार, ऑनेस्टली आई डोंट नो, बिकॉज मैं क्या था कि मेरा मन में यही था कि यार अभी the movie is received well, it has Yeah, got totally. a good thing, but now I don't want to screw it up. I don't want to do a film fast and then people will say, ये तो लुफलुक था, you know. या टोटली So I wanted to make again a movie with the same love I did Kamal Haasan and Shubh Mangal, because I had a story to tell. I was dying to tell that story. So I was like, unless I'm dying to tell a story, I should not embark on this journey, because everybody working with me, as a director, you need to inspire others around you. And I think a director gives purpose and meaning. So मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इसमें मेरा दिल इतना नहीं है. So then I should not marry a girl who I'm not serious about. So and every film is like a marriage, you know. जी The love and the work and everything together. So I feel that I should wait for the correct girl every time. सर आपने आमिर सर के साथ काम किया तो उनका प्रोसेस कैसा रहता है कि क्या वो रिहर्सल ज़्यादा करते हैं जैसे कि आपने बताया, पर क्या वो इम्प्रोवाइज करते हैं या फिर क्या प्रोसेस रहता है? It's a beautiful process working with Aamir sir in every step of the way. I think what I enjoy working with Aamir sir is every जो होता है ना हर एक स्टेप का एक मैक्सिमाइज करना. अभी सपोज आमिर सर ये इंटरव्यू कर रहे हैं जी. तो हिज फोकस इज हाउ डू वी मेक अ ग्रेट इंटरव्यू. सपोज वो गेम खेल रहे हैं, हाउ डू मेक दैट एवरी मोमेंट. आई थिंक अद्वैत टोल्ड इन वन इंटरव्यू ऑल्सो दैट अबाउट आमिर सर, यू हैव वर्कड विद हिम सो लॉन्ग. ही सेड दैट्स द थिंग आई फाउंड विद आमिर सर इज वो प्रेजेंट में कैसा बेस्ट कर सकते हैं वो सोचते हैं. वो चाहे वो उस टाइम पे फिल्म कर रहे हैं या पानी फाउंडेशन कर रहे हैं. Yep. तो इट्स एब्सोल्यूट प्लेजर वर्किंग विद आमिर सर बिकॉज ही गिव्स हिज बेस्ट इन एवरी स्टेप ऑफ द वे. चाहे वो एक शब्द का रीटेक हो, चाहे वो स्क्रिप्ट पे बैठना या फिर से एक टेक करना क्योंकि मुझे लग रहा है कि सर ऐसा आप कर सकते हो, या तो some other person has done something wrong and for that he has to give a retake. He doesn't mind at all. So it's just an absolute pleasure to see how he every moment में I think सर को लगता है कि मैं 99.99% मैं दूंगा तो it's not enough. I want to give 100% whatever I'm doing that time. अभी पार्टी में if sir is talking to somebody he gives 100%. So that's why he's called Mr. Perfectionist. That's why he's called Mr. Perfectionist. Absolutely. सर filmmakers over the years when you were growing up, आपके favorite filmmakers कौन थे जिन्होंने आपका सिनेमा के लिए पर्सपेक्टिव चेंज किया? Oh wow. I come from Tamil cinema, right? Yep. So for me, my first film which opened my eyes to cinema was a movie called Guna by Kamal sir. Yeah, totally. And that also in a way, he played, I think, at that time there was no name for it, but he played a person with a special need. Maybe the character he played was autistic, perhaps. But that time we didn't even know कि कैसा बोलेंगे सब. So Kamal sir is a very big influence because again, he is a person who always chooses difficult subjects, always believes in the audience and keeps pushing. Maniratnam sir, Balachandar sir, Balu Mahendra sir, all from Balu Mahendra sir did Sadma. Sadma, yes. So from Tamil cinema. Then in Hindi cinema, I remember while growing up, apart from Aamir sir and Lagan and Taare Zameen Par and all that, I remember I am still a huge fan of Nagesh Kukunur. So his movies were very influential during my college days. Hyderabad Blues, Rockford, Teen Diwarein. He gave me the inspiration. Like I've never met him. I hope to meet him one day and tell him this. He gave me the inspiration that because I was in engineering too, that a person from outside can come inside and make a film in a small budget. And well, in world cinema, I am a huge fan of Spielberg. Spielberg is genius. So Spielberg, James Cameron, Clint Eastwood, many such greats filmmakers. And in Hindi, I'm a huge fan of Shujit Da. I love Shujit Da, Sriram Raghavan, so many directors. Aamir sir की 5 favorite films. My favorite films were yeah. Lagan, okay, Taare Zameen Par, Dangal, hopefully Sitaare Zameen Par, okay, and Lapata Ladies. And favorite Kamal sir films? Kamal sir films, Guna, Mahanadi, Devar Magan, Nayakan,
There's a long list. Oh, there's too much. Pushpak, Pushpak. Heram, Virumandi. Every frame with Kamal is for me a film. So I'll be biased. Even I'm one of those fans who used to fight with people saying that, "Nahi, ye picture best hai." So I'm like that fan of Kamal sir. Which are your favorite Hindi films of all time? 5 favorite films. Lagan is right at the top. I feel Lagan is, as an Indian film, is one of the best. Dil Chahta Hai, I feel is an absolutely brilliant film. Andhadhun. Zoya Akhtar's movies I really like. Vicky Donor I really like. And I remember one movie which my father is a big fan of, Gulzar Saab's movies I really like. So he introduced me to Hindi cinema when I was a kid. And I remember this movie called, I think it's called Koshish. Yeah, there's a film. Yeah. Where Sanjeev Kumar and I think Jaya Bachchan they play people who can't, I think, hear. They have a hearing disability. Koshish yes. is the film. So that my father used to show me that film when I was very small age. So somewhere I think maybe thanks to my father, his name is P.V. Ramaswamy, he showed me Guna and he showed me Koshish. And in both of them, they are people, so-called disabled people. But they are not, right? Yep. They are people with special needs. And maybe that had an influence in today me doing this film. सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, हम करते हैं हैशटैग शो. मैं कुछ एक्टर्स का नाम लूंगा और आपको उनको हैशटैग देना है. अच्छा. आमिर सर. आमिर सर. हैशटैग फॉर आमिर सर. मैजिक. सलमान खान. बिंदास. शाहरुख खान. चामा. आयुष्मान खुराना. मचा. He's my macha. Janilia. Positive energy. Kamal Haasan. He doesn't believe in God, so I can't call him God. But he's Andavar, as you call in Chennai. Yes. Rajni sir. Inspiration. Mani Ratnam sir. Guru. That's it, sir. Thank you. It was lovely talking to you, sir. Thank really you. Looking forward to the film. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Pleasure. Yeah. Pleasure. Thank you.